गुड मॉर्निंग पिला माने वेलकम टू matsciodia ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ସମ୍ବିତ କୁମାର ଦାସ ତମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ଓଟିଏଟି ସିଟିଟି କ୍ଲାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ୍ ରେ ତ ଆଜି ଆମେ ସେଲୁଲାର ରେସ୍पिରେସନ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କୁ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି ବା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲି। ତ ଏବେ ऑर्गेनिज्म ମାନଙ୍କର ରେସ୍पिରେସନ ଉପରେ ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି। तो आ ऊपर आमे माने बे डिस्कशंस करिवा। तो आजिर क्लास रे को पार्ट ऊपर डिस्कशंस हबो ता ऊपर देखिबा बिले। तो प्रथमे आसला कोन कोन रहउचे तरे इंट्रोडक्शन रहउचे टाइप्स। इंट्रोडक्शन तमरो रहउचे टाइप्स। इंट्रोडक्शन परे रहउचे रेस्पिरेशन ऑफ टाइप्स ता सहित हम से टाइप्स भितरे रेस्पिरेशन ऑफ फेजेस सब डिस्कशंस करे दिछि माने को टाइप रो को फेज रे को प्रकार रेस्पिरेशन होउची ता भितरे मु तो मानको बतै दैछि। ओके तो स्टार्ट करिया पिले। इंट्रोडक्शन कोन कहउची रेस्पिरेशन विषय। Respiration is the process by which organisms exchange gases between the air around them and the cell in their bodies. तो रेस्पिरेशन कोन बा श्वसन कोन बा श्वासक्रिया कोन जहा द्वारा ऑर्गेनिज्म माने प्राणी माने जीव माने कोन करिथांती पिले ना गैस वायु एक्सचेंज करथि सेमानकर सराउंडिंग सहित सेमानकर आखपाख एनवायरनमेंट सहित एवं सेमानकर सेल मध्य से गैस को कोन करे ना धरी रखे श्वासक्रिया जाको आमे नॉर्मल श्वासक्रिया ब्रीथिंग बोली कहउछन। All living organisms from the plants and animals to prokaryotic bacteria, archaea, eukaryotic protista, fungi and animals respire. सबु प्रकार ऑर्गेनिज्म एमिति तमर प्लांट्स माने मध्य माने प्लांट मानकर अलगा गोटे स्लाइड रे आसीबो तारि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स म डिटेल्स रे पढैमी पिले। तो एटी सबु प्रकार ऑर्गेनिज्म समस्ते एटी कोन करथांती पिले ना रेस्पिरेशन करी थांती। एटी कोन होउची प्रकृत रे ना ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड मूवमेंट। एटी कोन होउची ना ग्लूकोज तमरो ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करूची करि साइला परे कोन करछ त एनर्जी प्रोडक्शन होउची एवं से एनर्जी आम बॉडी रो डिफरेंट काम रे लागुची। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आम रेस्पिरेशन सही साइला परे सेल लु किबा आम बॉडी रो निर्गत होउची जोटा गोटे वेस्ट प्रोडक्ट तार कोनोसी काम आम बॉडी भितरे ना आवश्यक नाही से कोन होउची ना आम नाक देकी बाहर को बाहरी जाउची। तो रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस metabolic biochemical process that occurs in all living cell of an organism to produce energy through the intake of oxygen and the liberation of carbon dioxide from the oxidation of the various organic substances. फर्स्ट कोन कहला ना रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। आको काहेकि गोटे मेटाबॉलिक प्रोसेस बोली कहवा जाईची पिले मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म तमरा कोन जदी शरीर भितरे किबा कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म भितरे ता बॉडी देहर जदी कोनोसी गोटे जिंस तयारी होउची किबा कोनोसी गोटे जिंस भांगुची समथिंग इज सिंथेसाइज और समथिंग इज ब्रेक द टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो हियर the glucose molecules is break down in the presence of oxygen। तो ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोन होउची ना ब्रेक करूची जेतु ब्रेक करूची तो ये होउची गोटे प्रकार मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो पुनी अगेन मेटाबॉलिक तो हमर दी भाग रे करा जाईची गोटेला काटाबॉलिक आ गोटेला अनाबॉलिक। काटाबॉलिक तो हमर ब्रेक डाउन होबो अनाबॉलिक तो हमर सिंथेसाइज होबो। तो रेस्पिरेशन गोटे मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस जैव रासायनिक प्रक्रिया जोटा जीव मानक भितर होबो that occurs in all the living cell of an organism to produce energy। जो प्रोसेस द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कोन करि परिबे ना एनर्जी रो प्रोडक्शंस करि परिबे थ्रू द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। केमिति करिवे केमिति एनर्जी रो प्रोडक्शन करिवे से माने अम्लजान को कोन करिवे ना भितर को नेबे एंड द लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एवं अंगारक अम्ल को कोन करिवे ना बॉडी भितर निष्कासित करिवे फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आम बॉडी भितर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो माने ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे कोन हेबे ना नष्ट हेबे बा भांगीबे बा सेमानक एनर्जी रो रिलीज होबो
ये सबू जाक जिनस रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा ही हुई थाए। The energy produced is adenosine triphosphate or ATP, also known as the energy molecules। तो तुम माने को माइटोकॉन्ड्रिया टाइम रे ही पढ़ई थी एटीपी को कहा जाए कौन ना adenosine triphosphate। ये होती एनर्जी कॉइन बा हम शरीर रो शक्ति स्रोत एनर्जी सोर्स मध्य भी कहा जाई थाए। तो एठी कौन हुए ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखिबा हमें देखो ये हला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कला कार्बन डाइऑक्साइड तयारी कला विथ वाटर तो सहित 36 टा एटीपी एटीपी होची एनर्जी बुझी परछ की। तो ब्रीथिंग रे हमें माने कोन करचंती पिले ऑक्सीजन नहुचंती कार्बन डाइऑक्साइड छाडुचंती लंग्स को जाउची एवं लंग्स देउर तमरो सेल कथि जाउची माने एक ऑक्सीजन तमरो लंग्स रु जीव सेल कथि की पुणी कार्बन डाइऑक्साइड एटु तयारी हबो हे कि तमरो कोन हबो पुणी सेटा लंग्स माध्यम रे देकी हम नाक बाड देकी बाहर को बाहरी आसीबो हम बॉडी टू। तो सेल धियर ये तमरो जीव से डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो प्रोसेस हबो सेल भीतर ते छोट छोट मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन करिवो ग्लूकोज को भांगीबो एनर्जी फॉर्मेशन करेबो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रे सब दिन सब तमन को डिटेल्स रे बुझेम। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पिले कोन the simply definition of respiration taking oxygen into the lungs and taking out the carbon dioxide हम समस्त जानि छ ऑक्सीजन नबा कार्बन डाइऑक्साइड छाडीबा। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसीजर दैट इज रिलेटेड टू द ब्रीथिंग जा कि हमर कोन श्वासन प्रणाली ऊपर ही रिलेशन रही थाए। तो रेस्पिरेशन दीटा प्रकार रे हेइताए गोटे हला कोन इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन आ गोटे हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन पिले कोन जोटा सेल लेवल ले होउची जोटा सेल करूची कारण सेल होउची तो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ यदि सेल रेस्पिरेशन होबो देन आमे माने रेस्पिरेशन करिबा। तो प्रथम आसला इंटरनल रेस्पिरेशन केमिति गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगी के सेटु तमर एनर्जी रो फॉर्मेशन होउची बा एटीपी रो फॉर्मेशन होउची देन तापर आसला कोन ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो प्रथम आसला इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन पिले कोन दिस इज वन ऑफ द टाइप of respiration involved in the exchange of gases between blood and cell in the body। एठी गैस रो एक्सचेंज हबो गैस रो एक्सचेंज हबो between the blood and the cell सेल आउ ब्लड भितर गैस रो एक्सचेंज दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन और इनर ब्रेथ बोलता को जाय ता कोन को जाय पिले ना इनर ब्रेथ इज पार्टीशनेड इनटू टू टाइप व्हिच इज गिवन बिलो। ये मध्ये तमरो दुई भाग रे भाग करा जाय छै। Inner respiration can also be called as cellular respiration। ए सेलुलर रेस्पिरेशन करिया पई तमर माइटोकॉन्ड्रिया अति आवश्यक कारण सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोष अंगिका मध्य ही तमर सेलुलर रेस्पिरेशन होई थाए बा कोषीय श्वसन तमर होई थाए बिकॉज़ इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल कारण इंटरनल रेस्पिरेशन तमर सेल मध्य ही होई थाए। ये तमर दुई प्रकार पिले गोटे को कहूची एरोबिक रेस्पिरेशन अनदर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रथम आसला पिले कोन ना एरोबिक रेस्पिरेशन बा हाई इंपैक्ट ब्रेथ। एरोबिक रेस्पिरेशन कोन ना वायु बा तमरो ऑक्सीजन प्रेजेंस रे हबो वायु युक्त रेस्पिरेशन वायु युक्त श्वसन। The word aerobic came from the Greek language where aero related to air and bios signify life। जेतेबेले कोनोसी गोटे जीव को ऑक्सीजन रो आवश्यकता पडुची पवन रो आवश्यकता पडुची वायु रो आवश्यकता पडुची तार रेस्पिरेशन साइकिल को कंप्लीट करिया पई तार रेस्पिरेशन प्रोसेस को आगु नवा पई ताको हमें कहउछदी कोन पिले ना एरोबिक रेस्पिरेशन। The aerobic respiration is a procedure that can take place in the presence of oxygen only। एरोबिक रेस्पिरेशन सेतेबेले हबो जेतेबेले ऑक्सीजन न उपस्थिति रहिबो विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट टेक प्लेस। तो विदाउट ऑक्सीजन ने तमरा एरोबिक रेस्पिरेशन होई पारिबो नाही। एरोबिक रेस्पिरेशन करिया पई हेले प्रथमे हमकु ऑक्सीजन न आवश्यकता रहिची। In this aerobic respiration carbon dioxide and water are the dominant important end product। तो एटिरो मन रख एरोबिक रेस्पिरेशन ने इंपोर्टेंट डोमिनेंट एंड प्रोडक्ट होची किए ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ एनर्जी इन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ब्रेथ इट परमिट मोर एनर्जी। ये कोन करूची ना अधिक रु अधिक परिमाण रो एनर्जी रो फॉर्मेशन करै थाए।
तो एटा तमर केमिति हबो ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये हला तमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटा भूल अछि पिले एटा हबो 6 टा ऑक्सीजन सहित से कोन करिवो ना रिएक्ट करिवो 6 टा ऑक्सीजन सहित O2 सहित रिएक्ट करके तमर दबो कोन ना 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड आ 6 टा वाटर तो से तो एनर्जी दबो जतरे अधिक परिमाण र एनर्जी रो फॉर्मेशन हबो बुझि पाइलो तो aerobic respiration or high impact breath is takes place in the plant or trees mammals warm blooded animals and birds एवं ह्यूमन मानक मध्य भी तमर हेई थाए एरोबिक रेस्पिरेशन एबे देखिबा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखो ए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होउची से एक्चुअली को प्रोसेस सब देई की होउची ताकू भी हम माने देखिबा तो एठी तमर कोन होउची पिले प्रथमे ग्लाइकोलिसिस होउची माने ग्लूकोज ता पाइरुवेट को कन्वर्ट होउची देन तापर से जिनसा जाउची तमर कोउटी ना साइट्रिक एसिड साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल रे एनएडीएच एफएडीएच है कि तमरो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और केमोऑस्मोसिस बोलता को हमें कहउचंदी एया हेबा द्वारा तमरो कोन होउची पिले ना एटी एटीपी रो फॉर्मेशन होउची ए प्रत्येक टी साइकिल तमरो एटीपी रो फॉर्मेशन होइता ग्लाइकोलिसिस रे भी एटीपी फॉर्मेशन हबो साइट्रिक एसिड साइकिल भी एटीपी फॉर्मेशन हबो एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ने मध्ये तमरो एटीपी रो फॉर्मेशन हबो आ टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करिया पे तमरो कोन ना ऑक्सीजन नो आवश्यकता रहिची then तापर असला anaerobic respiration कोन कहउची ना the term anaerobic come from the Greek language where the anaero is related to the no oxygen and also bio means is which related to life जो जीव माने विदाउट ऑक्सीजन से माने कोन करि परिबे ना रेस्पिरेशन करि परिबे बा श्वासन करि परिबे से प्रकार रेस्पिरेशन को कोन कहै जाउची पिले ना anaerobic respiration और low impact breath anaerobic respiration need no oxygen to do it process एतरे कोनोसी ऑक्सीजन आवश्यकता नथाय ए प्रोसेस को कंप्लीट करिया पई anaerobic respiration और low impact breath is the way that can happen without any oxygen as it होया ये कोनोसी ऑक्सीजन आवश्यकता करिन without any oxygen anaerobic respiration or low impact breath has the chemical reaction end product are liquid or alcohol हम माने सेठी पड़तो तार end product होची कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर end product होची पिले कोन ना लिक्विड और alcohol coming to the topic of the energy is anaerobic respiration is deliver the less energy एवं ये बहुत कम परिमाण रो एनर्जी कोन करता है ना फॉर्मेशन करता है माने एटा तमरो ग्लूकोज ता एटा अल्कोहल को कन्वर्ट हबो विथ एनर्जी मात्र तमरो केवल खाली एटीपी रो फॉर्मेशन को टाइम रे हबो ना ग्लाइकोलिसिस टाइम रे हबो जेतेबेल तमरो पाइरुवेट रो फॉर्मेशन हेई गला तेतेबेल तमरो कोन हबो ना केवल लैक्टेट आ इथानॉल फॉर्मेशन हेई जो कोडी ना फर्मेंटेशन हेई साइला परे ये तमरो देखा जाय थाए ईस्ट रे anaerobic respiration इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट ईस्ट इन तमरो करता है बहुत सारा बैक्टीरिया भी करतानी anaerobic बैक्टीरिया करतानी एबे असला ग्लाइकोलिसिस से जो ग्लाइकोलिसिस कथा हम तो मानो टिके बतै दउची कोन द टर्म ग्लाइकोलिसिस originated from the Greek word glycos meaning sugar and lysis means splitting एटी सुगर रो ब्रेकिंग डाउन होउची सुगर रो कोन होउची स्प्लिट होउची आकु प्रपोज करथिले किए तीन जण साइंटिस्ट जण का नाम हला गुस्ताव एमडेन ओटो मेयरहॉफ एंड जे पारांस and it also known as the EMP pathway तो glycolysis को EMP pathway मध्ये कहै जायते तो glycolysis रे पिले हुए कोन ना during glycolysis one molecule of glucose a 6 carbon sugar is enzymatically converted into two molecules of the pyruvate which is a 3 carbon atoms गोटे 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोन हबो गोटे पूरा एंजाइमेटिकल प्रोसेस रे गति करिवो करि साइला परे शेष अवस्था रे ये कोन करिवो ना 3 कार्बन विशिष्ट गोटे पाइरुवेट को कन्वर्ट हबो जे कि 2 मॉलिक्यूल This process involves a series of enzymatic reactions including phosphorylation and oxidation and result in the production of small amount of ATP. एटी मध्ये तमर ATP रो फॉर्मेशन हेता है ता से तो NADH रो मध्ये फॉर्मेशन हेता है दा कहते हैं निकोटिनामाइड्स एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स ये मध्ये तमर एग्जाम रे आसे What is the full form of NADH? ये हो the total process of the glycolysis एटी कोन हुए पिले ना ग्लूकोज ता तमर कन्वर्ट हबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज देन पुनी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हबो तमर ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज
Then the fructose 6 phosphate ta convert of fructose 1,6 biphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase. It again तमर कौन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स aldolase ये दी भाग रे कन्वर्ट हो जिवो गोटेला ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बट पुनी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तमर अगेन ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज को यूज करके पुनी तमर कोथि कन्वर्ट हबो ना ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट पुनी ग्लिसरॉल डिहाइड तमर ग्लिसरॉल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस रो प्रेजेंस रे तमर कन्वर्ट हबो का गति कि ना 1,3 biphosphoglycerate when 1,3 biphosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase to form 3-phosphoglycerate. Puni again in the presence of phosphoglyceromutase, the 3-phosphoglycerate convert to 2-phosphoglycerate and finally it is convert to phosphophenol pyruvate in the presence of enol and after the enzymatical reaction of pyruvate kinase then the phosphoenol pyruvate convert to pyruvate. एटी तुम माने देखो को जगह एटीपी रो यूज होउची एटी गोटे एटीपी रो यूज हैला एटी गोटे एटीपी रो यूज हैला आ एटी एटीपी रो प्रोडक्शन कोडी होउची ना एटी एटीपी रो प्रोडक्शन हेची एटी एटीपी रो प्रोडक्शन हेची एटी एटीपी रो प्रोडक्शन हेची आ एनएडीएस ता तमर एटी आसी पुनी अगेन एटी एटीपी रो फॉर्मेशन करिची हाल टिकेट देखिबो को रिएक्शन ने तमर एनएडीएस रो फॉर्मेशन हेची को रिएक्शन ने एटीपी रो फॉर्मेशन हेची एई दिन तो देखिबो आ बेसी किछ एतरे आसीओनी. Then the Krebs cycle pile. The Krebs cycle is named after the discoverer of Sir Hans Adolf Krebs. ये Sir Hans Adolf Krebs को डिस्कवर करिथिबारु ना Krebs cycle पढिछि पिले. ये तमर ग्लाइकोलिसिस पर होइता है ये गोटे aerobic respiration process. Krebs cycle is a series of biochemical reaction in a closed loop. ये तमर ग्लाइकोलिसिस पर होइता है. The TCA cycle play a central role in the cell metabolism as it receive product from the various substances. बहुत सारा substances तमर पाइता है तमर क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल मध्ये भी कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स मध्ये भी कहा जाता है टीसीए रा फुल फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड द इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड इज टाइटली रेगुलेटेड साइकिल ये गोटे रेगुलेटेड माने बहुत सारा एंजाइम को रेगुलेट करंती एथरे किछि दिन से तयारी हबो किछि दिन से भांगीबो मु तमन को एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कथा कहितली. The end product after each turn of the cycles are 1 GTP or ATP molecules, 3 NADS molecules and 1 FADS molecule. कौन अछि मन रखिबो ए सब जिंस एथरे गोटे 1 GTP और ATP molecule तयारी होइताय तीनोटी NADS molecule तयारी होइताय आउ गोटे FADS2 molecule तयारी होइताय. They are required to transfer electron to the mitochondrial respiratory chain also known as the electron transport chain. ये तमरा ए सब प्रतिकूल ए जो प्रत्येक जिंस तमर GTP हो NADS हो FADS2 हो ये सब जगह तमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे तमर कोन हबो ना जायकी लागि थाए. द लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल कोडी ना इन यूकैरियोट रे तमर देखा जाता है साइट्रिक एंड एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आउ तमर प्रोकैरियोट रे तमर प्रोटोप्लाज्म रे हेता है यूकैरियोट रे तमर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया माने माइटोकॉन्ड्रिया रे मैट्रिक्स रे हेता है आउ तमर प्रोकैरियोट रे कोडी हेता है पिले ना प्रोटोप्लाज्म दे हेता है. पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोसोल ऑफ द सेल पायरुवेट तमर साइटोसेल हेता है माने ग्लाइकोलिसिस तमर cell cytosol लेता है. Pyruvate is converted to acetyl CoA and is transported to the mitochondrial matrix, the innermost part of the mitochondria. ये तमरा कौन हबो ना pyruvate तमरा convert हे जिवो acetyl coenzyme को and is transported to the mitochondrial matrix, the innermost part of the mitochondria. एवं जेतेबेले से ये pyruvate रो तमरा कौन ना acetyl coenzyme को convert होउची सेतेबेले ये ट्रांसपोर्ट हे जाउची कोठी कि ना mitochondrial matrix जोटा कि गोटे innermost part of the mitochondria. मन रखिथिबा एरोबिक रेस्पिरेशन सब बेले माइटोकॉन्ड्रिया भीतर ही हेइते तते माइटोकॉन्ड्रिया होची रेस्पोंसिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द सेल. एटा होची द टोटल प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल. एटु तमर कोन हबो ऑक्सालो एसीटेट ता कन्वर्ट हबो साइट्रेट द्वारा कोठी कि ना आइसोसाइट्रेट को देन तापर सेटा तमर कन्वर्ट हबो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को देन तापर एटा कन्वर्ट हबो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एटा तापर पुनी सक्सिनेट को कन्वर्ट हबो पुनी सक्सिनेट रो एटा तमर फ्यूमारेट रो पुनी मालेट ये गोटे साइकिल प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस तमर आ पुनी अगेन फेरी परिबनी किंतु ये तमर पुनी साइट्रेट ता पुनी अगेन आउ तरे पुनी साइट्रेट ता कन्वर्ट हे परिबो बुझी परछ ना पिले ये गेला तमर क्रेब्स साइकिल जेटा को तमर सार हेंस एडल्फ क्रेब्स तमर कोन करथिले डिस्कवर करथिले. एटी देखो तमर एटी कोन हो तम खाली मन रखिबो को स्टेप रे एटीपी रे फॉर्मेशन होउची तमर सक्सिनाइल कोएंजाइम टा कन्वर्ट होची तले सक्सिनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए सॉरी
इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सेति काल तमर गोटिए एटीपी तमर कोन होची ब्रेक डाउन होची एवं गोटे जीडीपी रो फॉर्मेशन होची पुनी सक्सिडेन होतले फ्यूमारेट होची सेति काल तमर गोटे एफएडीएच 2 तमर तयारी होची आइसोसाइट्रेट जतले अल्फा कीटो ग्लूटारेट तमर तयारी होची सेतले गोटे एनएडीएच तयारी होची इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज देन तापर पिले आसला कोन ना एक्सटर्नल गिल्स तो एक्सटर्नल गिल्स कोन पिले एटी जो माने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करिवे सेटा हला तमर इनर रेस्पिरेशन ई हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पुनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानकर अलग अलग रहिता है तो प्रथम हला तमर लंग्स सेम जिंस लिखि जे जहा सेठी बते जेरा सब सेही जिंस से किछि बुझा जिंस नाही तो डेफिनेशन बळया पढी दबो बहुत इजी अछि पिले जेटा बुझे जिंस मु तुम मन को बुझेई दउची lungs this technique is used by the mammals for the external respiration साधारणतः आमे माने mammals माने हुंतु किबा birds माने हुंतु बुझी परजे birds mammals ए मानकर lungs थाए reptiles माने मन किछि अछंते जो मानकर lungs थाए amphibians रो किछि species ए मान समते कोन करंती ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करि थांती देन तापर हला गिल्स बा गाली जाउ कोडिया रे कुआ जे गिल्स तमर पुनी दी प्रकार कोन कोन ना गोटे हला एक्सटर्नल गिल्स आ गोटे हला इंटरनल गिल्स हम सालामेंडर देखिथिबो सालामेंडर एमती गिल्स कोन हितो ना बाहर बाहर जो वाटर आ भीतर फ्लो करिवो सेटो ऑक्सीजन कंग्रा डायरेक्ट भीतर को टाणी की नै जिवो देन तापर असला कोन ना इंटरनल गिल्स वाला ये तमर थाए फिश मानक केसेस रे किबा तमर क्रस्टेशियन जो माने मोदु चिंगुडी पिंगुडी मानक केसेस रे एटी इंटरनल गिल्स थाए ए माने कोन करे पानी भीतर को नेबे आ ए गिल बाटा देखि ताको छाणी बाहर इटा हला इंटरनल गिल्स बुझि पाइलो then the trachea this type of approaches is used by the terrestrial arthropods and some insect cockroach रो तमे देखि दिबो बहुत सारा छोट छोट होल थिबो एयर पोर्ट टाइप रो ततरे एयर पास करिवो तने अवसर पर बेको काटि देले भी से बहुत दिन जाई बचे बुझी परछन तो ये हला तमर कोन ना ट्राचिया तापर हला डिफ्यूजन इनटू द ब्लड किछि स्पेसीज अछन जो माने डायरेक्टली ऑक्सीजन से मान ब्लड को कोन करे ना डिफ्यूजन करि परिबे जेमति एम्फिबियंस माने हुंतु जो माने पानी देहरे श्वास क्रिया करंती किछि तमर कोन वर्म तमर ये जिया टाइप रो किछि पोक direct diffusion this procedure is used by some organisms like jellyfish and flatworm ए माने डायरेक्टली पानी रु कोन डायरेक्ट डिफ्यूजन करेबे पूरा सेल को सेति ब्लड को डिफ्यूजन होतिला डायरेक्ट किबा कोन सोट फ्लूइड को ए माने डायरेक्टली सेल को ही करिवे डायरेक्ट डिफ्यूजन सब बुझी पाइला तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हला एति थिला नेक्स्ट क्लास रे आमे माने आ गोटे नुवा स्लाइड सहित पुन थरे देखा हवा जे तम मानकर किछि गोटे डाउट रहउची त तमे माने कमेंट कर पिले मते पचारि परियो नल तम माने हम मैथ्स ओडिया सहित जॉइन हेई परिवो जहाँ भी तम मानकर डाउट अछि तम माने कमेंट करो सब्सक्राइब करो आ नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुवा चैप्टर सहित पुन थरे हम माने देखा हवा से पर्यंत समस्त धन्यवाद समस्त भल रुह थैंक यू पिले।